દેવભૂમિ દ્વારકાના ખંભાળિયામાં એક યુવકને નિર્વસ્ત્ર કરી અને માર મારતા પોલીસ મથકે લઈ જવાની ઘટનાના આજે ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે। ઘટનાને પગલે રાજકોટ રેન્જ આઈજી સંદીપ સિંઘ દોડી આવ્યા હતા અને એલસીબીને તપાસ સોંપીને જવાબદારો સામે કડક પગલાં ભરવા માટેનો આદેશ કર્યો છે। ત્યારે પોલીસે આ ગુનામાં 5 આરોપીઓને ઝડપી લઈ અને રિમાન્ડ વગેરેની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। आज रोज सवारे लगभग 10:30 आसपास एक चंदुभाई अर्जनभाई रूडाच एमने एक ब्लेक कलर क्रेटा में आरोपीओ द्वारा अज्ञात स्थाने ले जवामां आव्या हता। एनी किडनेपिंग करवामां आवी हती अने पछी एमने निर्वस्त्र करी अने गाममां फेरावी अने पुलिस स्टेशन में लईने आया हता। एनी गंभीरताने ध्यानमां लई कड़क में कड़क कलमों मुजब गुना दाखिल करवामां आव्या छे। 5 लोगों विरुद्ध गुना दाखिल करवामां आया छे। पुलिस द्वारा 5 आरोपीओनी तात्कालिक असरथी धरपकड़ करवामां आवी छे। व्यवस्थित सेक्शन एमां आईपीसी नी विविध कलमों अंतर्गत अने आईटी एक्ट नी कलमों अंतर्गत रजिस्टर करवामां आव्या छे। अत्यारे आगळनी कार्रवाई ए लोगोनी रिमांडना प्रोसीजर ये करवानुं रहेशे। खरेखर आ बनाव बनवाना कारण शुं छे एनी तपास उडानपूर्वक करवा माटे अत्रेथी सूचना आपवामां आवी छे।